Good morning students. Today in this lecture we will complete the convex mirror. We will start from the convex mirror. So what is actually convex mirror? Convex mirror होता क्या है? Convex mirror, it is a type of spherical mirror which is made from a part of a sphere, a part of a hollow sphere. Actually convex mirror is a type of special mirror. It is a type of spherical mirror which is made up of a hollow sphere. Okay, so when we used to cut the part of a hollow sphere in such a way that we polish the internal surface, and the reflection takes place from the external surface or the outer surface. Reflection takes place from the outer surface, and the polish is on internal surface. ठीक है ना? Actually this convex mirror is a part of the hollow sphere. Is made up of hollow sphere. Okay, and hollow sphere is actually made up of glass. So हम क्या करेंगे, जब हमने एक पार्ट इसका कट कर दिया और उसकी इंटरनल सरफेस पे पॉलिश कर दी और एक्सटर्नल सरफेस से रिफ्लेक्शन होने लगा, ठीक है ना, जो बल्जिंग आउट सरफेस है उससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. किस सरफेस से हो रहा है? बल्जिंग आउट सरफेस. तो बल्जिंग आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो एक्चुअली ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है. बस यही इसकी प्रॉपर्टी है. देखिए ये तुम्हारा पूरा हॉलो स्फीयर है, तो इसका एक सेंटर होगा. नॉर्मल सी बात है, सेंटर होगा. एक किसी भी स्फीयर का, किसी भी सर्कल का क्या होता है? एक सेंटर होता है. इसका भी होगा सेंटर. तो ये जो सेंटर होगा इसे हम कहेंगे वर्चुअल सेंटर. क्या कहेंगे? वर्चुअल सेंटर कहेंगे. क्यों वर्चुअल सेंटर कहेंगे? क्योंकि ये सेंटर मिरर के बैक साइड में है. और ध्यान से देखिएगा, मिरर ये नहीं है, इंटरनल पॉलिश मिरर नहीं है. कॉनकेव के केस में पॉलिश बाहर की सरफेस से होती थी, रिफ्लेक्शन अंदर की सरफेस से होता था. तो जब रिफ्लेक्शन अंदर की सरफेस से होता था तो मिरर अंदर की तरफ है, और मिरर के सामने तुम्हारा सेंटर था. जो मिरर के सामने की तरफ सेंटर था वो रियल सेंटर था, वो रियल फोकस था. लेकिन मिरर के बैक साइड में था वो वर्चुअल था. लेकिन इसके लिए मिरर कहाँ है? इसके लिए मिरर, अगर मैं इसको ए बी नेम दे दूँ, इस पूरे अपर्चर को मैं ए बी कह दूँ, तो आप देखिए मिरर बाहर की तरफ है और पॉलिश अंदर की तरफ है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बैक साइड में है. इसलिए ये कैसा सेंटर कहलाएगा? वर्चुअल सेंटर कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट, ठीक है, एक लाइन जो कि इस वर्चुअल सेंटर से पास कर रही होगी और इस कॉन्वेक्स मिरर के मिड पॉइंट से पास कर रही होगी. इस मिड पॉइंट को कहेंगे पोल. क्या कहेंगे? पोल कहेंगे. सो पोल इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. पोल इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है. ठीक है ना. एंड सी इज द वर्चुअल सेंटर. A line which passes through the pole and the center of curvature, either it may be real or it may be virtual. So the line which passes through the pole and the center of curvature is known as the principal axis. Actually it is an imaginary line. Okay. And जितना आपने डिस्टेंस ये c लिया है, जितना डिस्टेंस c लिया है उतना ही डिस्टेंस c डैश लेंगे आप सामने की तरफ, उतना ही डिस्टेंस लेंगे c डैश. ठीक है ना. जितना आप c डिस्टेंस ले रहे हैं उतना ही c डैश डिस्टेंस लेंगे. और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, बीचों बीच की डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे. उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे. ठीक है ना. उस पॉइंट को फोकस कहेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोकस है, ठीक है ना, जो फोकस है, ये फोकस भी हमारा कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस है. Why this is known as the virtual focus? Because it lies behind the mirror. ठीक है ना. And the light rays which are coming parallel to the principal axis after reflection from the convex mirror, or you can say diverging mirror.
कॉन्वेक्स मिरर, और यू कैन से diverging mirror. So after reflection from the convex mirror, diverging mirror, the ray of light which is coming parallel to the principal axis, after reflection gets diverged and appears to pass through the focus. ऐसा लगता है कहाँ से पास कर रही हैं? फोकस से पास कर रही हैं. That focus which lies behind the mirror is termed as the virtual focus. And इस virtual focus से काम नहीं चलना है. Light appears to pass होंगी. तो इसलिए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए we have to consider some focus in front of the mirror which is at equal distance as like the virtual focus from the pole. ओके जैसा कि वर्चुअल फोकस पोल से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर हमें बाहर की तरफ एक फोकस कंसीडर करना है. एफ डैश हमने उसे कंसीडर किया. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस आइदर इट मे बी रियल एंड द वर्चुअल इज टर्म्ड एज द फोकल लेंथ. ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. इस टर्म को, इस डिस्टेंस को जो पी एफ और पी एफ के बीच, पी एफ डैश के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे फोकल लेंथ कहेंगे. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या कहा जाता है इसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. वही चीज़ जो कॉन्केव में पढ़ा था वही यहाँ पे फॉलो होगा. इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे पूरी डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर को. एंड द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन द आर एंड द एफ. R means radius of curvature and F means focal length. So what is the relationship? So the relationship is that R is equals to twice of F. Radius of curvature is equals to twice of focal length. Now focal length is equals to radius of curvature upon 2. Focal length is equals to radius of curvature upon 2. So actually this is the relationship between the focal length and the radius of curvature. F equals to R upon 2, where R is the radius of curvature and F is the focal length. क्लियर हो गया होगा इतना? आई थिंक इतना बिल्कुल क्लियर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. सो now rules for the formation of image by the convex mirror. So what are the rules? So number one rule is that actually this is the convex mirror, and this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature, this is the F dash and this is the C dash. So now when the ray comes parallel to the principal axis, when any ray comes parallel to the principal axis, then after reflection it diverges. Okay, and appears to pass through the focus. ठीक है ना, कहाँ से पास होता मालूम पड़ रहा है? फोकस से पास होता मालूम पड़ रहा है. तो ये हमारा क्या है? रूल है किसका? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ सेकेंड रूल. एक्चुअली यहाँ पर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई थी, पीछे की तरफ चली गई थी. ठीक है ना, डाइवर्ज हो गई थी, बट ऐसा लग रहा था कि रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से आ रही थी? इट कम्स फ्रॉम द फोकस. ऐसा लग रहा है जब ये लाइट यहाँ से कोई रिफ्लेक्टेड लाइट को यहाँ पे कोई पर्सन जब खड़ा होगा और देख रहा होगा इस रिफ्लेक्टेड लाइट को, तो उसको ये लग रहा होगा कि उसको ये लगेगा अरे ये लाइट बेंड होकर थोड़ी ना आई है, उसको लगेगा कि लाइट सीधी आ रही थी. और लाइट सीधी आ रही थी मतलब लाइट कहाँ से आ रही होगी? फोकस से आ रही होगी. फोकस से. क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा. नेक्स्ट रूल इज दैट ये पोल है, ये एफ डैश है, ये सी डैश है, ये एफ है और ये सी है. अगर कोई रे सीधा ऐसा लग रहा है फोकस पे फॉल हो रही है, कहाँ फॉल हो रही है? फोकस पे फॉल हो रही है सीधे. ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगी. तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी. एक्चुअली लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फोकस से पास करेगी, बिल्कुल फोकस से, बट ये डाइवर्ज हो जाएगी.
and now it becomes parallel to the principal axis, just opposite of the rule 1. Actually rule 2 is the just opposite of the rule 1, ठीक है ना. rule 2 जो है वो rule 1 का क्या है, just opposite है. So now rule number 3. rule number 3 क्या बताता है वो देखिएगा ध्यान से. रूल नंबर 3 क्या बताता है, ठीक है. ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ डैश है एंड सी डैश है. इफ अ रे appears to fall on the center of curvature, it seems that the ray is falling over the center of curvature, then it rebounds back on its original path. ऐसा लगेगा कि अगर लाइट रे कहाँ गिर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉल कर रही है, तो वो रिबाउंड बैक हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ पर. सो दिस इज द थर्ड रूल फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. नाउ फोर्थ रूल, and fourth rule is just same as that of the concave mirror. So what is the fourth rule? Focus, center of curvature, f dash, c dash. The fourth rule is that if a ray falls directly on the pole, so that is actually incident ray. That is incident ray. And principal axis behaves like a normal, and principal axis behaves like a normal. Actually principal axis behaves like a normal, and the angle between the incident ray and the normal is termed as the angle of incidence, and the angle between the incident ray and the normal is termed as the angle of incidence. Okay, and the ray of light is reflected, and the ray of light is reflected from it. So this is actually the reflected ray. This is actually reflected ray. This is actually reflected ray. ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, reflected ray हो जाएगी, यहाँ से reflect हो जाएगी ray, and the angle between the reflected ray and the normal is termed as the angle of refraction. The angle between the reflected ray and the normal is termed as the angle of refraction. ठीक है ना, इतना एंगल हमारा जो है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है. So this is the incident ray, this is the reflected ray. ठीक है ना, इंसिडेंट रे हमारा क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज एंगल आई, एंड एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल वो एंगल आर है. सो इस कंडीशन में द फोर्थ रूल स्टेट्स अस दैट द एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर. Angle I is must be equals to angle R, and this is the all four rules which are which of the convex mirror. Now the ray diagrams or the conditions of the image formation by the convex mirror. So we have to look for the ray diagrams after this. Conditions for the image formation by convex mirror. As in the concave mirror there are 6 conditions. As in the concave mirror there are 6 conditions, but in the case of convex mirror there are only 2 conditions, and we have to make only the 2 conditions with the help of 4 rules. With the help of 4 rules. In the case of concave mirror there are 4 rules, and we have to make the 6 ray diagrams, 6 conditions for the concave mirror, but in the case of convex mirror there is only 2 conditions. So conditions for the image formation of image by convex mirror. So the first condition is that when the object is kept between pole and infinity, when the object is kept between pole and infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया होगा. तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा, तो देखिएगा ध्यान से, so this is the pole
focus, F dash C dash, and this is the F and this is the C. When the object is kept between the pole and focus, pole and infinity, this is the pole and this is the infinity, this is the pole and this is the infinity, ठीक है ना. तो कहीं भी ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दीजिए आप, ठीक है ना. डजंट मैटर आप कहाँ रख रहे हैं, बट इट मस्ट बी स्ट्रेट, इट मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एंड द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इट डाइवर्जेस एंड इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम द फोकस. ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है. इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम द फोकस, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट if a ray of light appears to pass through the center of curvature, then it reflects back on its original path, and where the two virtual rays meet, there will be their image is formed, then if their image will be formed, and that image is known as the virtual image. That image is known as the virtual image. So the three characteristics of the image are: number one, virtual and direct. Number second, diminished. Actually there are three characteristics which we have to look for in each and every ray diagram. So number one is nature, number second is size, and number third is position. So the nature is actually virtual and direct because the image is formed behind the mirror, opposite side of the object, so the image is virtual and direct, and the image is diminished. It means it is smaller in size as compared to that of the object, so it must be diminished. And number three is that what is the position? So the position is between P and F, behind the mirror. So the position of the image is between P and F, behind the mirror. Behind the mirror means it means opposite side of the object. Behind the mirror means it means opposite side of the object. So there are the three characteristics of the image formed by the convex mirror. These are the three characteristics. Now we have to look for the second condition. The second condition is that when the object is kept at infinity, 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 ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ होगा तो क्या होगा एक्चुअली देखिएगा, ये एफ डैश पॉइंट है, ये सी डैश पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे. It means the ray must be coming parallel to the principal axis. The ray must be coming parallel to the principal axis, and after reflection it diverges, and the ray appears to pass through the focus, and the ray appears to pass through the focus. Actually the ray diverges, and it is and the person or the object which is seeing the reflected light, ठीक है ना, to them it seems that the light comes from the focus. उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, बट एक्चुअली वो वर्चुअल रे है, तो ऐसा लगेगा पीछे की तरफ से आ रही है, ठीक है ना. तो इसके कंडीशंस क्या हो जाएंगी, कंडीशंस क्या क्या होंगी, जाके ये रे मैंने बता दिया, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी अगर, तो वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, बट ऐसा लगेगा कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है. तो बिल्कुल वही कंडीशन होगी यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. तो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट.
The image formed is virtual and erect, ठीक है ना. The image formed is virtual and erect, ये virtual and erect होगा. Number second condition is that the image is highly diminished. The image is highly diminished. Okay, and the number third is that the image is formed at F. Image is formed at F. Image is formed at F behind the mirror. Behind the mirror. Okay, so the image is formed behind the mirror. These are the three characteristics, and these are the two, and these are the two conditions, or you can say the ray diagram for the convex mirror. So I think it is clear to you all. And now we have to look for the sign conventions. Sign conventions for the convex mirror. Okay, so now the sign conventions for convex mirror. The sign conventions for convex mirror is exactly same as like that of the sign conventions for the concave mirror. The sign conventions are same. So number one sign convention is that all the distances are measured from the pole. All the distances are measured from the pole. All the distances are measured from the pole. So if we measure distance, right hand side of the pole, or you can say in the direction of the incident ray, because the incident ray is moving in this direction from left to right, and you also measure the distance from left to right, then all the distances which are measured right hand side of the pole, then all the distances are taken as positive. And the distances which are measured left hand side of the pole are taken as negative. So the three sign conventions we have covered already. So number one sign convention is that all the distances are measured from the pole. And number second sign convention is that if we measure distance right hand side of the pole, then all the distances are taken as positive. And if we measure distance left hand side of the pole, सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होंगी. और पोल से कहाँ की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, then all the distances will be taken as negative. सारी डिस्टेंसेस कैसे ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी. I think it is clear to you all. ठीक है ना, सारी की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाएंगी. And now the fourth sign convention is that all the distances which are measured above the principal axis, अभी तक आप जो है वो जो मेजरमेंट कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट कर रहे थे. कैसा मेजरमेंट कर रहे थे? हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट कर रहे थे आप. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो रहा था आपका. ये भी हॉरिजॉन्टल था, राइट हैंड साइड जा रहे थे तो भी हॉरिजॉन्टल था, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे थे तो भी हॉरिजॉन्टल था. तो ये कुल मिला के आपका हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट था. ठीक है, बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग the distance in the vertical direction. ठीक है ना, if all the distances which are measured above the principal axis, then all the distances are taken as positive. अगर हम सारी distances जो कि principal axis से ऊपर की तरफ measure करते हैं, वो सारी डिस्टेंस किस में ली जाएंगी? पॉजिटिव में ली जाएंगी. दिस इज आर फोर्थ साइन कन्वेंशन. ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. And all the distances, the fifth sign convention is that all the distances which are measured below the principal axis are taken as negative. ठीक है ना, जितनी भी डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो सब कैसे ली जाती हैं? निगेटिव ली जाती हैं. बट यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस इस केस में ऐसी नहीं आ रही है जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो. ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर एक कंडीशन में, चाहे फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा कहाँ बनती है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है. यहाँ पर किसी भी कंडीशन में, कॉन्वेक्स मिरर की किसी भी कंडीशन में इमेज जो है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनने वाली है. इमेज हमेशा कैसी बनेगी? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी. इसलिए वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी. बट साइन कन्वेंशन तो हमको याद ही रखना है. तो वो साइन कन्वेंशन यही बोल रहा है. फिफ्थ साइन कन्वेंशन इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल.
So these are the 5 sign conventions which are same in case of concave mirror as well as in case of convex mirror. Now we have to look for the value of u, v and f, that whether they are taken as negative or positive in the case of convex mirror. So what is actually u? So u is object distance, and you know very well that the object is placed always left hand side of the pole. The object is always placed left hand side of the pole, or you can say in front of the mirror. So the value for the u is always taken as negative. So the value for the u is always taken as negative. Okay. And now here in this ray diagram you have seen that AB is the object and the distance between the P and the B. The distance between the P and the B is termed as U, and it is actually object distance, and U is taken as negative है over here. यहाँ पर U हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. क्यों नेगेटिव लेंगे? किस लिए नेगेटिव लेंगे? इसलिए नेगेटिव लेंगे क्योंकि U जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस है, एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, एंड इफ वी मेजर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल देन द डिस्टेंसेस विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो यू इज टेकन एज नेगेटिव. अब पोल से लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस लेंगे ना, पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ, तो जब पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यू की वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में सारी डिस्टेंसेस किस में ली जाएंगी? नेगेटिव में ली जाएंगी. तो अब पोल से जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो यू की वैल्यू किस में हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी. इसीलिए नाउ द वैल्यू फॉर द v हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द v इज द इमेज डिस्टेंस. एक्चुअली v इज द इमेज डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज इज टर्म्ड एज द v, that is image distance. So a dash b dash is the image, and p is the pole. So the distance between the pole and the image is termed as v, and it is actually the image distance. ठीक है ना. तो इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वेयर वी हैव टू मूव राइट हैंड साइड ऑफ द पोल, because all the distances are measured from the pole, and to measure the distance, image distance, we have to move right hand side of the pole. Then all the distances are taken as positive. If we measure the distance right hand side of the pole, then all the distances are taken as positive. So in this case, because the image is formed behind the mirror and the image is right hand side of the pole, so that's why the value for the image distance, it means v is taken as positive over here. I think till here there is no problem. And now what about f? F is the focal length. F is the focal length. The distance between the pole and the focus is termed as the focal length. So focal length is denoted by small f. Actually focal length is denoted by small f. The distance between the pole and the focus is termed as the focal length. तो मुझे ये बताइए आप कौन सा फोकस कंसीडर करेंगे? f कंसीडर करेंगे, f डैश कंसीडर करेंगे. देखिए सारी रेस कहाँ से पास हो रही है? भले ही वर्चुअल रेस पास हो रही है, लेकिन रेस तो पास हो रही है ना. तो सारी रेस कहाँ से पास हो रही है? पीछे की तरफ जो f है उससे पास हो रही है. पीछे की तरफ f है, पीछे की तरफ कहाँ? राइट हैंड साइड जो f है उससे पास हो रही है. तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस is termed as the focal length, and the f is in the right hand side, and if the f is in the right hand side, then the distance between the pole and the focus is termed as the focal length, is also taken as positive. So focal length भी क्या ली जाएगी? Positive ली जाएगी. But why focal length is taken as positive? Because the f which we are considering is in the right hand side, and the distance between the pole and the focus is termed as the focal length, is also in the right hand side. तो ये f लेंगे जो राइट हैंड साइड की तरफ है. तो पोल से लेकर फोकस तक का जो ये f होगा, जिसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, ये भी किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपने देखा कि u v f जो है ये हमारे u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या इमेज डिस्टेंस है, f क्या फोकल लेंथ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? साइन कन्वेंशंस पर डिपेंडेंट है. और ये आपको याद रखना है, बिल्कुल क्लियर कट रखना है माइंड में कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमको सॉल्व कैसे करना है. u की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, f की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे. बस इन तीनों वैल्यूज़ को हमें मिरर फार्मूला में यूज़ करना है. मिरर फार्मूला हमारा वही है जो कॉनकेव मिरर में हमने यूज़ किया था. तो मिरर फार्मूला हमारा क्या है? मिरर फार्मूला वही 1/f इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. तो दिस इज द मिरर फार्मूला. ठीक है ना. और यहीं पर हमें जो है इन तीन में से कोई भी दो टर्म दिए जाएंगे, या तो v दिया जाएगा या u दिया जाएगा.
इन 3 टर्म्स में से कोई 2 टर्म्स दिए जाएंगे और एक टर्म पूछा जाएगा, देन वी हैव टू यूज़ द मिरर फार्मूला टू कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट lecture, we will discuss about the height of the image and height of the object for the convex mirror, and the numericals which are based on the convex mirror. We will cover those topics in the next video, in the next lecture. Till then, thank you, tata, bye bye. And if you like the video, then please like it, share it, subscribe my channel for the latest notifications. Thank you.